Hello viewers, I am Deepthi. In my series for class 9 English Literature ICSE, today I am going to start with Julius Caesar. Act 1 I am trying to cover in two parts. First part I am making today with again 50 plus questions. In Act 1 as you know Julius Caesar का introductory part है. Class 9 में Act 1, 2 complete आएगा. तो अभी हम 1 के लिए start करने जा रहे हैं. ट्रेजर चेस्ट के ऑलरेडी मैं कई चैप्टर्स पोइट्री और प्रॉस के लिए ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ क्लास 9 के लिए. सो स्टार्टिंग विद दिस, अब इसके अंदर फर्स्ट एमसीक्यू इन द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 1. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट प्रीवियस आस्क्ड द वर्कमैन? व्हाट आर यू डूइंग इन द पैलेस? इज टुडे अ हॉलिडे? वेयर आर यू गोइंग? व्हाट इज योर प्रोफेशन? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इज टुडे अ हॉलिडे. जो इतने लोग आए हैं वहां पे. In Act 1 Scene 1, which of these characters was not present? Carpenter, Cobbler, Morulus or Antonio? And correct option is Antonio, जो वहाँ पर present नहीं था. Julius Caesar Act 1 Scene 1 took place at Caesar's Palace, the marketplace, Flavius' house or the battlefield. And the correct option is the marketplace. Who said these words? I meddle with no trade matters nor women's matters. The farmer, the carpenter, the cobbler or Flavius. कौन बोलता है ये वर्ड्स? कॉबलर बोलता है. और ये भी डबल मीनिंग वर्ड बोला है उसने. और ये हमारा करेक्ट आंसर जो हमको एक्सप्लेन करना आएगा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. Where is thy leather apron and thy rule? Options are Flavius to cobbler, Flavius to carpenter, Morulus to carpenter, Morulus to cobbler. And the correct option is Morulus to carpenter. को पूछा है कि आपका एप्रन कहाँ है, रूलर कहाँ है. What reason did cobbler give for being on the street instead of being in his shop? On a working day वो यहाँ पे क्यों है? To see the crowning of royal prince, to celebrate Christmas, to celebrate the birthday of Caesar, to see Caesar and to rejoice in his triumph. And correct option is D. वो देखना चाहता है सीजर और उसकी जीत का एंजॉय करना चाहता है. Which of these adjectives did Morulus not use to describe the commoners who were on the street? You stones, you witty characters, you less that worthless things, you cruel man of Rome. And the correct option is you witty characters. Whom did Julius Caesar defeat according to Act 1 Scene 1? Pompey, king of Egypt, ruler of Germany or Pompey's son? And the correct option is Pompey's son. Have you not made an universal shout that Tiber trembled underneath her banks? What is the Tiber is referred in this line? A river in Rome, a statue in Italy, a city in France, none of the above. And the correct option is a river in Rome. Option number A. Choose the option that lists the sequence of events in the correct order as it occurred in Act 1 Scene 1. If your soles are worn out, I can mend you. Go home, you lazy creatures, go home. Is this a holiday? We took a day off to see Caesar and rejoice in his triumph. Where is your leather apron and the rule? And the correct sequence is option number D. सबसे पहले 2 है. Go home, you lazy creatures. Go home. Is this a holiday? छुट्टी है, तुम यहाँ घूम रहे हो. Next is 4. Where is your leather apron and the ruler? वो पूछा था अभी आपने देखा ही था. Next is 1. If your soles are worn out, I can mend you. अगर तुम्हारे जूते खराब हो गए हैं, मैं ठीक कर सकता हूँ. And last is we took a day off to see Caesar and rejoice in his triumph. उन्होंने आंसर दिया कि हम उसकी triumph को rejoice करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. Which of these questions did Morulus not ask the common people? What foreign land has he conquered to rule? Didn't you know Pompey? Why are you not in your shop today? What foreign princes are chained to the chariot to grace in captive bonds? तो किसके बारे में बात हो रही है? Why are you not in your shop today? ये नहीं पूछा, बाकी सब तो पूछे हैं. And when you saw his chariot, didn't all of you shout all at once so loudly did the Tiber river shook from the sound, echoing within its bed? Who is referred to his in this line? Julius Caesar, Antony, Pompey और Cassius? तो यहाँ पर Pompey के बारे में बात हो रही है. According to the Act 1 Scene 1, the common men should not celebrate because
Caesar had defeated Pompey's blood, यानी कि उसके सन को ही तो हराया है. Caesar was defeated by Persian king. Caesar was critically injured in the battle. There was no reason to celebrate. करने का कोई reason ही नहीं है. The correct option is Caesar ने क्या किया? कौन सी बड़ी बात है? Pompey के blood को ही तो हरा कर आया है. तो ये उनका कहना था. A option is correct. As per it, what were the carpenter and cobbler wearing? Their work clothes, leather jacket and the ruler, their finest clothes. None of the above. And the correct option is their finest clothes. अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जैसे पार्टी में जाते हैं तो वैसे तैयार होके आए हैं. Choose the option that shows the correct relationship between statement 1 and 2. One is the carpenter and the cobbler were wearing their finest clothes. They were going to see Caesar and celebrate his triumph. तो कौन सी स्टेटमेंट होगी इसके अंदर क्या रिलेशन होगा? 1 ट्रू है, सेकंड फॉल्स है. ऑप्शन इज स्टेटमेंट 1 इज द कॉज ऑफ 2, क्योंकि उनको सेलिब्रेशन करनी है इसीलिए वो तैयार होकर आए हैं. Which of these statements did the cobbler not speak? I don't meddle in tradesman matters. I am a fine artist and make shoes. I don't meddle in women's matters. I am indeed a surgeon of gold shoes. And I am a fine artist and make shoes. ये उसने नहीं कहा, बाकी सब cobbler ने बोला है. Cobbler said, well sir, to wear out their shoes and get myself more work. Why did he say this? क्यों उसने ऐसा कहा? He was actually looking for more business. He was leading the men so that their shoes get worn. It was a sarcastic comment to Flavius. He did not hear the question from Flavius, and the correct option is it was a sarcastic comment to Flavius. क्यों उसने ऐसा बोला? कि जब उसने हमसे पूछा कि आप इतने लोगों को लेके कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है मैं इतने सबको लेके जा रहा हूँ ताकि इनके शूज भी वर्न आउट हो जाए और मुझे और बिजनेस मिल जाएगा, क्योंकि जूते घिसेंगे तो मैं ठीक करूंगा. आफ्टर ऑल मैं कोबलर हूँ. तो sarcasm में उसने उसको आंसर ये वाला बोला है. Which of these questions did Flavius ask the cobbler? Why do you lead these men through the streets? What is your trade? Where is your leather apron? Why are you wearing your best apparel on? And correct is why do you lead these men through the streets? So ये उससे पूछा तुम इतने लोगों को लेके कहाँ जा रहे हो? क्योंकि उसको तो चाहिए नहीं था ना कि वहाँ पर कोई लोग होने चाहिए. What did the people of Rome do to see Pompey pass the streets? Climb up to the walls and battlements. Climbed to chimney tops with infants in their arms. Climbed on towers and towers. All of the above. And the correct option is all of the above. तो ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि पॉम्पे कितने लोगों का फेवरेट है, कितना फेमस है लोगों के बीच में, कितने खुश है वो लोग. किसी दूसरे की खुशी थोड़ी खुश होते हैं, जिसको अपना समझते हैं उसी की खुशी तो हम खुश होते हैं. तो इसीलिए What happened when the people of Rome saw the great Pompey's chariot? They made universal shout. Tiber trembled underneath the banks. Both A and B, none of the above, and the correct option is C. Both A and B दोनों correct हैं, क्योंकि दोनों का meaning तो आप समझ ही रहे हैं. Next is, what were Flavius and Maurus trying to do in Act 1 and Scene 1? Discourage the commoners from celebrating Caesar's triumph, reminding the common people how they greeted Pompey, motivating people to go back to work, helping the commoners build Rome's economy. And the correct option is discourage the commoners from celebrating Caesar's triumph. यहाँ पर main aim उसका यही है. Next is, how did Maurus incite fear in the commoners' mind in Act 1? Run to 2 houses, fall upon your knees, pray to God to intermit the plague. यानी कि terrible punishment हो जाएगी. I will put you in prison for treason. Your houses and property will be attached to the crown. तो correct option is B. Pray to God to intermit the plague, ताकि कुछ ऐसा ना हो जाए, मतलब इन तुम्हें punishment से बचा पाए God जो है. What did Flavius and Maurus do for which they were punished? Disfiguring Pompey's statues, destroying Caesar's statues, pulling the scarves off Caesar's statues, discouraging the commoners from greeting Caesar in his triumph. And the correct option is C, क्योंकि आपने देखा है कि वो सीजर के स्टैचू से स्कार्फ को पुल कर रहे हैं, हटा रहे हैं. What did Caesar tell Calpurnia do in the beginning of Act 1 Scene 2? क्या बताता है? Be careful as the race is going to begin. Flag off the race as a tradition. Participate in the race along with Antonio. Stand directly in Antonio's path as he runs the race. And correct option is stand directly in Antonio's path as he runs the race. क्योंकि एंटोनियो तो भागेगा और तुम वहीं पे स्टैंड करो.
ये आप क्यों आपको करने हैं ये वाले क्वेश्चंस, आपको पता ही है। अब आपका हाफ ईयरली क्लोज आ रहा है, तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं जो मैं लिटरेचर की क्लास 9 के लिए बना रही हूँ, अगर आपका अभी भी कोई चैप्टर बच गया है जो हाफ ईयरली में आ रहा है और मैंने कवर नहीं किया, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वैसे मैंने कोशिश करी क्योंकि जनरली मेरे अकॉर्डिंगली सिलेबस में जो कवर हुआ है पोएट्री, प्रोज और इसका एक्ट 1 वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका हाफ ईयरली का सिलेबस पहले खत्म हो जाए। फिर भी अगर कोई चैप्टर अभी बचा हुआ है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो बिफोर योर पेपर, हाँ, इफ इट इज नॉट टू अर्ली। Next is choose the option that lists the sequence of events in the correct order as it occurred in Act 1. I hear a voice that's shriller than all the music calling out Caesar. Flavius says, just so many statues you see that have been decorated in honor of Caesar. Cassius says, I have noticed that you seem less friendly toward me than I am used to. Brutus says, a soothsayer bids you beware the ideas of March. And correct sequence is option number D. पहले 2 आएगा। Flavius says just so many statues you see that have been decorated in honor of Caesar, ताकि वो सारे statues गंदे कर दे। Then next is one, I hear a voice that's shriller than all the music calling out Caesar, कि मुझे ये आवाज बहुत shrill लग रही है। Next is Brutus says the soothsayer bids you beware the idols of March, ये उसने बोला। और लास्ट में आएगा 3 कि कैसियस ने आगे बोला I have noticed that you seem less friendly toward me than I am used to, मतलब मैं तुम्हें ज्यादा लाइक करता हूँ, तुम मुझे कम कर रहे हो, मुझे उतने ही तुम्हारी तरफ से मतलब नहीं मिल रहा जो मैं कर पा रहा हूँ तुम्हारे लिए। Why did Caesar want Antonio to touch California during the race? He wanted Antonio to pull California into the race. If an infertile woman is touched during this holy race, she will escape the curse of sterility. ये वहाँ की मान्यता थी। To complete the race, it was important that California must be touched. Antony should catch California's hand and bring her to Cassius. तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? बी। आपको पता ही है कि वहाँ की ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली अगर कोई इनफर्टाइल वुमेन यानी जिसका बेबी नहीं होता है वो इस रेस में टच करती है तो वो इस कर्ज से रिलीफ हो जाता है, उसको एस्केप मिल जाता है, यानी कि फिर बेबी आ जाता है, मतलब कंसीव हो जाता है। None of the statues should be decorated in honor to Caesar. Who said this to whom? Cassius to Brutus, Flavius to Marullus, Marullus to Casca और Brutus to Flavius. तो फ्लेवियस ने मॉरुलस को कहा कि कोई भी स्टैचू अच्छा मत छोड़ो, इन्होंने डेकोरेट किया वो हटा रहे हैं डेकोरेशंस को। Why did Flavius and Marullus not want the commoners to participate in Caesar's celebration? क्यों नहीं चाहते हैं वो? They were afraid that Caesar would soar to great heights of power, that the people of Rome will live in fear and be Caesar's servants. Both A and B, none of these, and the correct option is both A and B, दोनों ही correct है, क्योंकि उनको लगता है कि Caesar बहुत ज़्यादा powerful हो जाएगा, अपने मतलब great height पे पहुंच जाएगा, तो इसलिए वो ये नहीं चाहते, तो both A and B is the correct option. Why does the soothsayer called out for Caesar during the festivities? तो यहाँ पर आ जाएगा he also wanted to take part in the race, he wanted to garland his beloved ruler of Rome, he wanted to disrupt the festivities and rituals, he wanted to warn Caesar of the upcoming threat on his life. And the correct option is D. He wanted to warn Caesar of the upcoming threat on his life कि तुम्हारी जिंदगी के लिए खतरा है, ये सूथसेयर उसको बताने की कोशिश कर रहा है। Select the option that correctly displays the traits of Cassius according to Caesar के हिसाब से। And idiot है, manipulative है, brave है, skilled observer है, या thinks too much बहुत ज़्यादा सोचता है। तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि वो मैनिपुलेटिव भी है, स्किल्ड ऑब्जर्वर है और साथ में थिंक्स टू मच बहुत ज़्यादा सोचता भी है। Beware the idols of March. Who said this to whom? Caesar to Cassius, a soothsayer to Caesar, Antony to Caesar, Brutus to Cassius. और कौन कह रहा है ये? A soothsayer to Caesar कि ध्यान रखो जो बताया गया है, बेसिकली उनको उसको वार्न कर रहा है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता। Next is how did Caesar react when a soothsayer told him to be beware of 15th March? तो उसका बिहेवियर क्या था? सीजर कैसे रिएक्ट करता है? He said that the man was crazy. Let us leave him to himself. Pass. Let us continue the festivities. All of the above. तो all of the above कहते हैं ठीक है. He said the man was crazy. अभी वो मतलब सपने की दुनिया में जी रहे हैं. Let us leave him. छोड़ दो इस बात को अभी के लिए. और pass मतलब चलो आगे फेस्टिवल का एंजॉय करते हैं. तो उस बात को सीरियसली लेता ही नहीं है।
I am not feeling festive. I lack some of Antony's lively competitive spirit. Who said this to whom? कौन कह रहा है एंटनी के जैसा मैं नहीं हूँ अपने आप को एंटनी की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, क्योंकि वो तो रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कौन अपने आप को उससे कंपेयर कर रहा है? कैसियस टू एंटनी ये बोल रहा है, ब्रूटस टू कैसियस, कैस्का टू ब्रूटस और फ्लेवियस टू कैस्का। तो ये आंसर ब्रूटस कैसियस को बता रहा है कि मैं एंटनी जैसा नहीं हूँ, उतना कॉम्पिटिटिव मैं नहीं हूँ। What do Flavius and Morales do when they reach the temple at the Capitol? Performed rituals at the temple, plot Caesar's murder, alter Caesar's statues, distributed sweets to celebrate Caesar's triumph. And the correct option is alter Caesar's statues. Caesar में तो अभी कुछ कर नहीं पा रहे, तो उसके स्टैचू को ही खराब कर रहे हैं। Who stays behind in the public square after the procession departs? Antony and Morales, Casca and Soothsayer, Morales and Flavius, Brutus and Cassius। कौन पीछे रह गया जब चला गया, प्रोसेशन आगे चला गया, तो ब्रूटस एंड कैसियस बातें कर रहे थे, वो पीछे ही रह गए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। When the throng returns to the public square, what does Caesar say about Cassius? He thinks too much. He is fat and wealthy. He is a nobleman. He is loyal to the crown. And the correct option is he thinks too much. Option number A. In Act 1, Scene 2, who has been compared to a rider of a stubborn horse? Antony, Julius Caesar, Brutus, Cassius। किसको कंपेयर किया गया है? ब्रूटस को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइडर ऑफ ए स्टबर्न। According to the Brutus, what trait of Antony's does he lack? नहीं है उसमें liveliness, bravery, truthfulness, imagination। तो क्या नहीं है? वो कहता है मेरे में उतनी liveliness नहीं, मैं उतना खुश नहीं रह पाता हूँ। ऑप्शन नंबर ए। What reason did Brutus give to Cassius for not being friendly towards him? He was concerned about Caesar's health. He was sad since he did not get any recognition for the triumph. He was overwhelmed with private thoughts and conflicting emotions. He actually was not friends with Cassius. तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? He was overwhelmed with private thoughts and conflicting emotions, क्योंकि वो अपने आप में इतना उलझा हुआ है, इसलिए वो कहता है कि मैं अभी तुम्हारे से इतना फ्रेंडली नहीं हो सकता। What does Cassius say to Brutus to bring him on his side? Brutus is more deserving than Caesar. Brutus cannot see his own worthiness. Brutus was the wisest of all the noblemen. Brutus was the kingpin. And the correct option is B. Brutus cannot see his own worthiness, कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितनी अच्छी values हैं imbibed. What virtue of Brutus is Cassius highlighting in Act 1, Scene 2? He loves Cassius more than himself. He loves honor more than he fears of death. He prefers money than honor. He prefers to be with Caesar. तो क्या बताने की कोशिश करता है? He loves honor more than he fears of death. कि मुझे इज्जत बहुत प्यारी है। तभी आपने अगर पूरा जूलियस सीजर पढ़ लिया अभी, आपने देखा हो कि एंड में वो कैसी डेथ अपने लिए लेता है। According to Cassius, Caesar is mortal because he is subject to sickness and death, drowning and fever, temptation and fever, death and betrayal. And the correct option is sickness and death. Caesar is mortal because he is subject to sickness. भाई मरेगा तो हर बंदा ना, जो आया वो जाएगा। Which trait of Cassius' personality is exhibited in Act 1, Scene 2? He is wise and thoughtful. He is truthful and trustworthy. He is clever and manipulative. He is fair and loves Rome. And the correct option is he is clever and manipulative. कि कैसे आंसर देना है? What did Brutus not want, even if he loved Caesar? He did not want to be a noble in Caesar's army. He did not want Caesar to become the king. He did not want to see Caesar being hailed by the commoners. He did not want Caesar to spend money on the festivities. And the correct option is B. He did not want Caesar to become the king, क्योंकि उसको ये लगा था कि अगर वो king बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा extra powerful हो जाएगा। What did Caesar dare, meaning कि challenge Cassius to do on a harsh windy day as the Tiber swelled? To have a race against the tide, to watch the river swell and pray that it does not flood Rome, to catch fish in the turbulent waters, jump into the rough water and swim to the distant point. तो क्या कहता है वो? लास्ट ऑप्शन, जंप इनटू द रफ वाटर एंड स्विम टू द डिस्टेंट पॉइंट। ये सारी बातें वो याद कर रहा है।
What does Cassius want to convey Brutus by giving him examples of Caesar's drowning in sickness? ये बातें वो क्यों Cassius Brutus को क्यों सुना रहा है? पुरानी बातें क्यों सुनाई जा रही हैं? Caesar is brave and sturdy. Caesar is prone to diseases. Caesar is weak and vulnerable. Caesar is afraid of swimming in water. तो ये बातें वो क्या बताने के लिए कर रहा है? Correct option is Caesar भी weak है, Caesar भी vulnerable है, वो आज powerful हो रहा है हम लोगों की वजह से, क्योंकि बाकी लोग उसको बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर अपने आप में बढ़ती जा रही है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, Cassius compared himself to which ancestor when he talks about saving Caesar from drowning? डूबने से बचा रहा है तो अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है? बढ़ाई करने के लिए, अपनी बूस्ट करने के लिए। एनास, प्रोमेथियस, एफ्रोडाइट, आर्कियस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एनास से, अपने एंसेस्टर एनास से अपने आप को कंपेयर कर रहा है, अपनी ब्रेवरी को। What did Casca not say when Cassius invited him for dinner the next day? कौन सी बातें कही है, कौन सी एक नहीं बोली है? If I am still alive ये बोला था, if you are still sane मतलब तुम अच्छे माइंड में रहोगे बोला था, if your dinner is worth eating ये भी बोला था, I have another commitment ये उसने नहीं बोला था, तो ऑप्शन नंबर D is correct in this case. Next is what a dull man he is become. He was so quick-witted when he was in school. Who said this for whom? Brutus for Casca, Cassius for Brutus, Antony for Cassius, Octavius for Brutus, and correct option is Brutus for Casca के लिए बोली है उसने lines. What does Caesar think about Cassius in Act 1 Scene 2? He is very clever and talkative. He thinks too much and is dangerous. He is too thin to be a great warrior. He is too lazy to be a noble. And the correct option is he thinks too much and is dangerous. What did Cassius plan to throw through Brutus' window? A few letters appreciating Caesar, a few letters requesting to make Cassius the king, a few letters written in different handwriting as if they came from different citizens, a few letters indicating that Antony was conspiring to kill Caesar, and the correct option is C. A few letters written in different handwriting as if they came from different citizens ने लिखे हैं, overthrow करने के plan करता है। What message did Cassius want to give to Brutus to the anonymous letters? That Brutus was a great man, that Brutus had great reputation in Rome, that Caesar had very high ambitions, all of the above, and the correct option is all of the above, क्योंकि वो उसके अंदर वो फीलिंग्स इंसाइट करना चाहता है, इसलिए वो सारी बातें ब्रूटस के लिए पॉजिटिव बोल रहा है कि तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हारी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, और मोरोवर सीजर को नीचे दिखाना है, तो सीजर की एम्बिशंस बहुत हाई हो रही हैं इसीलिए। So with this, I conclude my today's video. 52 questions हो गए हैं. One other part from the same act I will make. If you like this video, then please tell me in the comment section. Thank you for watching till then. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. आप क्लास 9 में अगर हो और आपके पास मेरा ये ICSE का कोई भी स्टूडेंट जिसके पास मेरी वीडियोस पहुंच रही है, प्लीज शेयर करो ताकि ये बेनिफिट बाकी स्टूडेंट्स को भी मिल पाए। थैंक यू।